So today, what we are going to do is we are going to be doing June 2021, paper one, variant one. We are going to do this complete paper. But now, since we've already done each component once in order, now starting from today, what I'm going to do is I'm going to start with the relatively more difficult questions. Now, I'll tell you the list of questions that we're going to be doing. So we are going to start from question number 4, which I think is the most tricky question in this paper. Then we're going to do 8, 9, 10, 11. These questions we will start from, and then we'll do the rest of them. ठीक है, फिर बाकी हम जो रह जाएंगे वो हम कर लेंगे. They're relatively straightforward. But these 5 questions we are going to do first. ठीक है? So this is the order that we're going to be following. This is June 2021 now, paper 1, variant 1. इन 5 questions हम start करें, उसके बाद हम बाकी करेंगे. ठीक है? Now let's just go through the instructions as usual. So we have to make sure that we are showing all necessary working. Working हमेशा show करनी है. Steps skip नहीं करने हैं. आपके method के marks आपको तभी मिलेंगे. And then in your working, remember you want at least 4 significant figures. Throughout your working, you need at least 4 significant figures. ठीक है? फिर आपके answers accurate आएंगे. Just keep that in mind. Okay, now let's begin. So as I said, I'm going to start with question number 4. Okay, so we've got this diagram that shows part of the curve y equals a tan x minus b plus c. Okay, so this is the curve that we're given. A tan of x minus b plus c. We're given that b is between 0 and pi. And using that information, we have to state the values of the constants a, b, and c. ये तीनों में figure out करना है. ठीक है? Now, how do we figure out the values of these 3 numbers? Now, your transformation concepts need to be very good here. So ये 3 numbers जो हमारे पास हैं, ये तीनों क्या कर रहे हैं? So we've got a here, that's doing something with this function. A multiply हो रहा है outside the function. Multiplication का मतलब होता है stretch. And it's outside the function, that's vertical stretch. So basically, vertical stretch हो रहा है आपका graph. Vertical stretch हो रहा है with scale factor A. That's one thing that's happening. So अगर आपका original graph से हम start करें, कौन सा graph की बात करें? Y equals tan x, आपका original graph तो वो था. उसमें क्या क्या transformations हो रही हैं? एक vertical stretch हो रही है by a factor of A. अच्छा. Then what is happening here? Plus c का क्या मतलब है? That's translation. जब addition या subtraction होती है, that's translation. Now it's outside the function, तो ये vertical है. Plus कर रहे हैं कुछ तो अगर c की value positive है तो वो most likely ऊपर shift करेगा. But for now, we don't know what the value of c is, whether it's positive or negative. What we can do is we can write it like this. Say there's a vertical translation. There's a vertical translation. And it's by how many units? It's c units. ये आपका vector है, 0c, right? C units upwards or downwards. That's what is happening. And then you've got one transformation happening inside the function. Yes, that's correct. That is horizontal. The function के अंदर कुछ होता है वो horizontal होता है. और function के अंदर आपकी कोई चीज plus minus हो रही है. That is horizontal translation. ये 3 चीजें आपके पास tan के function के साथ हो रही हैं. इसका जो आपका vector होएगा वो क्या होएगा? That's going to be b0 because horizontal transformation with things work the other way around. Minus होता है तो right पे move करते हैं, plus होता है तो left पे move करते हैं. So now keep this in mind. ये 3 transformations यहाँ पे हो रही होंगी. Now let's start with the original function. आपका कौन सा function है? Tan x का function. उसमें ये transformations हो रही हैं और उन transformation करके आपका ये graph बन गया. ठीक है? Now you need to be mindful of how the tan x function look like. आपको याद होना चाहिए basically tan function किस तरह का होता है. Remember, tan function कहाँ से start होता था? It would start from 0
पाई ओवर 4 पे उसकी वैल्यू 1 होती थी और पाई ओवर 2 पे इट यूज्ड टू गो टू इंफिनिटी. सो tan फंक्शन लुक्ड समथिंग लाइक दिस. tan फंक्शन लुक्ड समथिंग लाइक दिस. ये आपका tan का ग्राफ इस तरह से होता था इस साइड के ऊपर. एंड देन एट पाई इट वाज 0 अगेन, और यहाँ पे आपका फंक्शन तो इस तरह का होता था. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका फंक्शन जो है उसमें किस तरह से क्या चेंजेस आएंगे. सबसे पहले आप देखें ये जो ओरिजिन था, ओरिजिन. वालेकुम अस्सलाम मुस्तफा एंड आशिर. ये जो ओरिजिन था हमारे पास, ओरिजिन ये कहाँ पे मूव कर गया है आपके ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन में. नाउ लेट मी जस्ट इरेज दिस फॉर अ मोमेंट, दैट विल मेक इट अ बिट मोर क्लियर. मैं इसको साइड पे बना लेता हूं. इनफैक्ट दैट माइट बी इजियर टू अंडरस्टैंड. इसको हम tan के फंक्शन को साइड पे बना लेते हैं. वेयर इज दैट. हम जो रेलेवेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं. दिस इज गोइंग टू बी pi over 2 0, and then we have pi somewhere. pi से इसका ग्राफ इस तरह नीचे को आ रहा होगा, यह पर ग्राफ इस तरह से. अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें इस ग्राफ के अंदर tan 0 से स्टार्ट होता है. एक साइड पे आपकी कर्व इस डायरेक्शन में ऊपर को जा रही होती है और दूसरी साइड पे आपकी कर्व यहाँ पे नीचे को इस तरह से जा रही होती है. इफ यू कंपेयर दैट विद दिस ग्राफ, आपके कर्व जो है अपनी डायरेक्शन, मतलब कर्वेचर किस किस पॉइंट पे चेंज कर रही है. अगर आप देखें इस पर गौर करें थोड़ा सा, एक पार्ट इस तरह का है, एक पार्ट इस तरह का है. ये जो दरमियान वाला पॉइंट है वो आपके पास किस जगह पर आ रहा है एग्जैक्टली. इफ यू ट्राई टू फोकस हियर, basically this is the point after which the curve is going upwards as an increasing gradient है. उससे पहले this is decreasing gradient, right? So this is basically the point जो आपका ओरिजिन से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, राइट? ओरिजिनल ग्राफ के अंदर कहाँ होता था ये पॉइंट? ओरिजिनल ग्राफ के अंदर दिस पॉइंट यूज्ड टू बी हियर एट द ओरिजिन. ओरिजिन वाला पॉइंट शिफ्ट होके कहाँ पर आ गया है? ओरिजिनल वाला पॉइंट शिफ्ट होके आपका pi over 4 1 पर आ गया. That is what has happened here. Now, what kind of transformation is that? आप देखिए horizontally कितना मूव किया हमने और vertically कितना मूव किया. Think about it. We have moved 1 unit up. Vertically आपकी 1 unit movement हो गई है, ठीक है. Horizontally we've got pi over 4 units right. Pi over 4 units हम right move कर गए. And we have moved 1 unit up. That is what has happened to the graph. Now compare that with the two transformations that we have written here. Vertical transformation क्या हो रही है? We have moved 1 unit up. ये किसको correspond कर रहा है? This is corresponding to this value of C, which was vertical translation. तो आपकी C की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे? The value of C should be +1. ठीक है, the value of C should be +1 because vertically आपका ग्राफ 1 unit ऊपर मूव कर गया. ठीक है. Horizontally क्या हो रहा है? Horizontally your graph is moving pi over 4 units to the right. Pi over 4 units to the right. Now that is horizontal translation. Horizontal translation में क्या होता है? जब आप right पे मूव करते हो, remember right पे मूव करते थे तो आप subtract कर रहे होते थे, और जब आप लेफ्ट में मूव करते थे तो आप ऐड करते थे, राइट? तो पाई ओवर 4 यूनिट जब आप राइट पे मूव कर रहे हो उसका क्या मतलब है? इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. एफ ऑफ एक्स आपका जो ओरिजिनल था दैट वुड गो टू एफ ऑफ एक्स माइनस पाई ओवर 4. तो अगर आप यहाँ पे देखें, बी की जगह पे इधर क्या आ जाना चाहिए? बी की जगह पे आपके पास आ जाना चाहिए pi over 4. So these are the two translations that we've got here. They are the ones that are easier to figure out first. Now, some of you might have a question कि हमने ये zero क्यों choose किया है? Why can't we look at another point? Zero का फायदा ये है कि zero choose करने से आपका stretch जो है वो eliminate हो गया, right? Stretch zero को तो आप stretch करोगे तो वो zero ही रहेगा ना. तो आपको ये पता है कि zero point जहां पे भी move कर रहे हैं वो stretch के through नहीं गया,
वो किसी और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू नहीं मूव कर सकता। जीरो आपका सिर्फ मूव कर सकता है थ्रू ट्रांसलेशन। तो 0 पॉइंट अगर यहाँ पे मूव कर गया है, the only transformation that can make the origin move, that's in our syllabus, is ट्रांसलेशन। ओरिजिन को और कोई ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन मूव नहीं करा सकती, इसको स्ट्रेच मूव नहीं करा सकती, इसको सिर्फ ट्रांसलेशन मूव करा सकती है। अगर ओरिजिन वाला पॉइंट मूव करके आपका इधर आ गया है, उससे आपको पता चल गया डायरेक्टली कि कौन सी ट्रांसलेशन हो रही है। वन ट्रांसलेशन इज 5/4 यूनिट्स टू द राइट एंड वन ट्रांसलेशन इज 1 यूनिट टू द अप। 1 यूनिट अप वाली ट्रांसफॉर्मेशन से आपको सी की वैल्यू मिल गई, और 5/4 यूनिट्स राइट से आपको ये बी की वैल्यू मिल गई। सो वी गॉट द वैल्यूज ऑफ सी एंड बी फ्रॉम दिस। ठीक है? Yes, Daniel, there is only one acceptable answer to these types of questions. Yes. So sometimes you can have multiple possibilities in some situations, लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनमें एक ही आंसर पॉसिबल होता है, राइट? उसमें एक ही आंसर पॉसिबल होता है। So we've got the value of C and we've got the value of B. Okay. अब हमारे पास क्या रह गया? अब हमारे पास रह गया A. Now आपको देखना है वर्टिकली आपकी स्ट्रेच किस तरह से हो रही है। ठीक है? Now you could think of it using transformations as well if you want, but that's going to be slightly trickier. I'll show this to you with using two methods. एक तो तरीका क्या है, जब आपके पास बाकी कॉन्स्टेंट्स आ गए, आपके पास फंक्शन अब क्या बन गया इस पॉइंट के ऊपर, इट्स y equals a into tan of x minus pi/4 plus 1. You've got all the other constants now, the only one that you're left with is a. इसका एक आसान तरीका क्या हो सकता है, जब आपको सिर्फ एक अननोन एक कांस्टेंट रह जाए, you've got the graph, आप ग्राफ पे कोई भी पॉइंट ले लें, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, उसमें x और y की वैल्यूज इनपुट कर दें, आपके पास a आ जाएगी, राइट? दिस इज द क्विकेस्ट वे, not the quickest, but this is the easiest way of finding the value of a. कि आप कोई भी एक पॉइंट ले लें ग्राफ से, उसमें जाके इनपुट कर दें और आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? सो लेट्स से I take any point from the graph. This is one possible point. Okay, pi/2 के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है? pi/2 के ऊपर this is 3. Or you could take an easier point जहाँ पे x, y में से एक 0, for example, ये ले सकता हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू 0. It'd be easier to evaluate, but it doesn't really matter. Let's say मैं ये point ले लेता हूँ pi/2 वाला. What does that give me? pi/2 and 3. इसके अंदर input कर देते हैं. So we are inputting pi/2 and 3. What does that give us? That gives us 3 equals a into tan of pi/2 minus pi/4 plus 1. Just evaluate this and see what you get. 3 equals tan of pi/4, which is going to be 1, plus 1, and the value of a turns out to be equal to 2. ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। तो बेसिकली कोई भी पॉइंट आप ग्राफ से डाल दें, उससे आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। So you've got the values of a, b, and c, and this is what we were looking for. ठीक है? This is one way to find the value of a. If you were to use transformations for this as well, आप क्या करते? आप देखिए ओरिजिन कहाँ पे मूव कर गया? ओरिजिन आपका पॉइंट इस ग्राफ की बेसलाइन पे था, बेसलाइन पहले आपकी एक्स एक्सिस थी। बेसलाइन कहाँ पे मूव कर गई यार? बेसलाइन हैज मूव्ड टू दिस पॉइंट, टू दिस लेवल नाउ। ये आपकी बेसलाइन बन गई, राइट? तो आपको वहां से बाहर से भी नजर आ रहा है सी की वैल्यू 1 थी, दिस इज योर बेसलाइन। अब आप देख सकते हैं ओरिजिन से स्टार्ट होकर pi/4 के इंटरवल में आपका ग्राफ कितनी यूनिट्स ऊपर जा रहा है? इट्स गोइंग 2 यूनिट्स अप। पहले कितना ओरिजिनल ग्राफ कितना ऊपर जाता था? pi/4 के इंटरवल में हमें पता है pi/4 के ऊपर क्या वैल्यू होती थी फंक्शन की? pi/4 के ऊपर tan की वैल्यू आपके पास 1 होती है। तो पहले pi/4 के इंटरवल में आपका ग्राफ 1 यूनिट ऊपर मूव करता था, राइट? पहले pi/4 के इंटरवल में आपका 1 यूनिट ग्राफ ऊपर मूव करता था। अब क्या हो रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट pi/4 के इंटरवल में आपका ग्राफ अब 2 यूनिट्स ऊपर मूव कर रहा है, राइट? इट्स गोइंग फ्रॉम 1 to 3. So that tells you there is a stretch by a factor of 2. 2 आपका स्केल फैक्टर है, बिकॉज पहले जो
हाइट आपकी 1 होनी थी, अब वो 2 हो गई है. Since the height has increased, that means increased by a factor of 2, that means ये जो a हमारे पास है यहाँ पे a की value 2 होनी चाहिए. So that's another reasoning that you could have for this. Okay, so a की value आप उस वजह से भी 2 लिख सकते हो यहाँ पे. Now in this question there are 3 marks that you have. तीनों मार्क्स आपके पास सिर्फ इन आंसर्स के हैं. एक मार्क ए का, एक मार्क बी का, एक मार्क सी का. So you don't have to show any working for this necessarily. आप इसको intuitively कर सकते हो देखकर if you're that good, but this is a proper way of thinking about it. I hope that makes sense. Right, this is probably the trickiest question that you'll find in this paper. Let me know if you have any problems with this, and then we move on after this. So I was looking at the examiner report, and they basically said it was extremely rare that somebody got all 3 answers correct in this case, especially the last one stretch जो है वो तो बहुत ही rarely correct था किसी का. But I hope that makes sense now. Let's move on. So that was question number 4. Yeah, it's not that difficult, but वो है कि transformations स्पेशली टैन के केस में ना कुछ लोगों को कंफ्यूज करती हैं, बिकॉज इसमें वो एम्पलीट्यूड वगैरह नहीं होता, तो आपको वो ख्याल रखना पड़ता है कि आप स्ट्रेच को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. दैट्स क्वेश्चन नंबर 4. आई एम गोइंग टू स्किप द अदर वंस फॉर नाउ. उन पे बाद में आते हैं, बाकी थोड़े से आसान है. लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. The diagram shows a symmetrical metal plate. The plate is made by removing 2 identical pieces from a circular disc with center C. Yeah, so JT people are now mocking others. ये कौन papers देता है? But okay. It was a bit tricky. I have to accept that. Okay. The diagram shows a symmetrical metal plate. The plate is made by removing 2 identical pieces. So you can see that here. The plate is made by removing 2 identical pieces from a circular disc with center C. अच्छा, एक आपके पास ये circle है. This is the circle. इसका center C है. From this center, okay. Is my screen blurred for everyone? Is my screen clear? Some people on YouTube are saying that it's probably blurred. Okay, let me just wait for their answer, because वहाँ पे lag आता है थोड़ा सा YouTube पे. There's a 20 seconds lag, I think. So just wait for their response. Okay, good. All right, ठीक है. चलें, let's look at this. The diagram shows a symmetrical plate. The plate is made by removing 2 identical pieces from a circular disc. पूरा एक circle है, उसमें से आपने 2 identical pieces remove किए हैं. And you can see those pieces here. ये piece एक remove हो गया, एक ये piece remove हो गया. अच्छा. Now, the boundary of the plate consists of 2 arcs, PS and QR. So these are the 2 arcs that you've got, QR and PS. And 2 semicircles, PQ and RS. So these are semicircles. जिसने बताया हुआ है, ये एक semicircle है और ये एक semicircle है. With PQ and RS as diameter, so you can actually draw them just to understand them better. ये basically आपके पास एक diameter है, उससे आपका semicircle एक बन रहा है, और एक ये diameter है PQ, उससे आपका एक semicircle बन रहा है. अच्छा. The radius of the circle with center C is 4 centimeters. तो बड़े वाले circle का radius 4 centimeters है, and PQ and RS also have a length of 4 centimeters. What that means is इसका radius कितना है? इसका radius 2 है. Semicircle जो है उसका radius आपके पास 2 है. Okay. Now, first of all, we need to show that the angle PCS is 2 pi over 3 radians.
एंगल PCS. अच्छा, let's draw that angle first. PCS angle आपके पास कौन सा आएगा? No, Fazan, it's not the arc. उसने कहा है PQ equals RS equals 4 centimeters. They haven't used the word arc there. So they're talking about straight lines. PQ straight line or RS straight line, that's 4 centimeters. Achha, show that angle PCS is 2 pi over 3 radians. Okay, PCS angle pehle mark kar lete hain. PCS, that's going to be this angle here. PCS, ye angle hum saman rahe. Now, how do you figure out this angle? Let's try to think about it. What we can do is we can actually draw this triangle. अगर हम इस line को extend कर दें इस तरह से, we have this triangle. इसकी length 4 है PQ की. Let me mark that full. PQ की length 4 है. CP and CQ are also going to be 4 because they are radii of the bigger circle. तो तीनों आपके पास side same है, so this is an equilateral triangle. Equilateral triangle है. If this is an equilateral triangle, what that means is every angle in that triangle is going to be pi over 3. अच्छा देखें यहाँ पे, you have to be careful. उसने show करने के लिए कहा है आपको. शो करने का मतलब है उसने आंसर आपको बताया हुआ है, तो आपको वर्किंग क्लियरली शो करनी है कि आपकी रीजनिंग क्या है कि आपके पास वो आंसर आ रहा है. ठीक है, अच्छा तो आप क्या लिखोगे? you'll write PQ equals CQ equals CP equals 4, or you can just say something like this. You can say the triangle CPQ is equilateral. That's what you could start from. That implies that the angle PCQ is going to be pi over 3. अगर एंगल PCQ pi over 3 है, तो जो उसने एंगल पूछा है PCS, what is that going to be? You can see this is the diameter. ये straight line है आपके पास. PCS is going to be pi. That's the angle in a straight line. Pi minus pi over 3, and that gives you 2 pi over 3. And that's what we had to show. Okay? This is what we get. Not 2 pi. This is pi minus pi over 3. Straight line pe angle pi hota hai. Okay? All right. Let's look at the next part. Now it says find the exact perimeter of the plate. Exact ka matlab hota hai you can't write your answers in decimals. It has to be exact. Decimals mein nahi jana. Acha. Now perimeter is the length of the boundary of the shape. So basically agar aap shape ko dekhen ab, the boundary is this. These lengths. ये दो semicircular arcs हैं. You've got this arc here, you've got this arc here. ये 4 arcs हैं, इनको add कर देना. ठीक है? अच्छा. अब इनका में सब कुछ पता है essentially. It's pretty straightforward. हम क्या करते हैं? हम PQ arc निकाल लेते हैं. So arc PQ equals arc RS. दोनों same है. इनकी वैल्यू क्या होगी? इनका एंगल कितना होता है? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज पाई. रेडियस कितना है? 2. सो इट्स गोइंग टू बी पाई into 2, or you can say 2 pi. That's the arc length for this. ये हम कहाँ से कैसे लिख रहे हैं? We're using the formula S equals R times theta. Arc length equals radius. Radius क्या है semicircle का? Radius is 2 into the angle. Angle is pi radian. Semicircle के अंदर angle pi radians होता है. So this is the arc length for PQ and RS. दोनों आपकी pi 2 pi आपकी arc length है. ठीक है? ये दोनों arcs आ गई. अब क्या चाहिए आपको? Arc PS and arc QR. दोनों ये भी same है. ये arc और ये arc ये भी दोनों equal हैं. कोई भी एक निकाल लें, उसको 2 से multiply कर सकते हैं. फिर let's find the arc PS. Arc PS, and that's the same as the arc QR. दोनों में same ही angle होगा. It's a symmetrical figure. What's the radius? Radius यहाँ पे 4 है. So S equals R theta again. Radius times the angle. 4 into the angle. Angle हमने first part में find किया. That's 2 pi over 3. What does that give us? That gives us 8 pi over 3.
What's the perimeter now? Perimeter is 2 pi plus 2 pi plus 8 pi over 3 plus 8 pi over 3, right? Because वो आपके पास दो arc lengths है दोनों sides के ऊपर. Just add all of this up and you'll get your result. Okay, you can see what this turns out to be. Can somebody tell me the result? 6, 6, that's 12, 12 and 16, that should be 28. So that's 28 pi over 3. That's the angle. That's the perimeter. ये हमें figure out करना. ठीक है? All right. Let's move on to the next part now. Now, the next part says you have to show that the area of the plate is 20 pi over 3 plus 8 square root of 3. आपने area ये show करना है कि याद है. ठीक है? Area of this complete plate. Now, I'm going to erase what I've done before, just so my drawing is clear after that. यहाँ से remove कर देते हैं. This is the original shape. This is the original shape. इस shape का area निकालना. अच्छा, now how do we find out the area? Now, one starting point could be that we start from the area of the circle. ठीक है, हम circle से start कर लें और फिर क्या करें, circle के area में से जो चीजें निकली हुई हैं उनको subtract कर दें. ठीक है, circle के area में से जो आपने चीजें remove कर दिया उनको subtract कर दें. Now, what have we removed from the circle? Can I just say the area of the plate is going to be area of the big circle minus area of two semicircles? Will that be okay? Will that give me the result? Area of the big circle minus area of the two semicircles. Is that going to be enough? 5 marks is actually a lot for that, if it was just that simple. Yes, so that's not going to be the case. 4 semicircles? Where is that coming from, Daniel? 4 semicircles? 4 semicircles? Okay, acha. So we've got complete circle. पहले complete circle बना लेते हैं just to understand it a bit better. So PQ आपकी ये arc होगी यहाँ पे और इसी तरह से SR आपकी ये arc होगी इस तरह से. This is the complete circle. Now, if you were to remove the semicircles from this shape, if you were to remove the semicircles from this circle, क्या होगा? आपका ये वाला पार्ट तो रिमूव हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी रिमूव हो जाएगा. The problem is we will still have these regions included in the area. इनको भी आपको रिमूव करना है. इनको भी आपको रिमूव करना है. Right? So Hassan, it's not just this. We have to remove those segments as well. उनको भी segments को भी remove करना पड़ेगा. And then you'll get your final area, right? So now we have to find area of the circle. That's pretty straightforward. Area of the semicircles. That's pretty straightforward. The main issue is finding the area of these segments. ठीक है? तो इसको figure out कर लेते हैं पहले. Right, this is the complicated part. ये हम यहाँ पे निकाल लेते हैं. Let me just write down the whole thing first. पहले हमने overall एक figure तो बना लिया. Let me just write that down for reference. The required area of plate is basically equal to area of the big circle minus area of two semicircles. वो आपने semicircles minus करने हैं minus the area of the two segments. वो जो दो segments मैंने यहाँ पे बनाए उनके areas का minus करना. ठीक है? अच्छा, big circle जो है उसका area क्या होएगा? That's pretty straightforward. Pi r square, pi into radius of the big circle, that is 4. ये आपका radius 4 है. That's going to be pi into 4 square.
minus area of the two semicircles, 2 into area of a semicircle क्या होता है, pi r square over 2, या आप इसको मिला के पूरा एक सर्कल भी बना सकते हो if you want. इसका रेडियस क्या है, रेडियस is 2, so we can say 2 times pi into r square divided by 2, ये आपके semicircle का एरिया होगा. Now this is the part that's left, area of the segments. ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको हम अलग से evaluate कर लेते हैं, then we just input that there. ठीक है, I'm going to do this calculation separately. ये हम यहाँ पे नीचे निकाल लेते हैं, इसको जाके नंबर डाल देंगे अभी. Let's find the area of the segment. Let's find area of one of these two segments. ऊपर वाला दे दें, देख लें PQ वाला segment है, उसका area निकाल लेते हैं. Let's call this segment PQ. इसका हम एरिया निकाल रहे हैं. ठीक है, कैसे एरिया, सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, राइट. तो आप क्या करोगे, एक इस तरह से सेक्टर बना लोगे. डोंट अज्यूम इट्स अ सेमी सर्कल विच सम ऑफ यू यूज्ड टू डू इन ओ लेवल्स. ये सेमी सर्कल नहीं होता, ये सेगमेंट होता है, इसमें सेमी सर्कल के फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई करने. ठीक है, ये कैसा निकलेगा, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से, CPQ. This is the triangle. ये एंगल पता है हमें, we know it's an equilateral triangle 4 4 4, हमने पहले फिगर आउट किया था. The angles are pi over 3, all the angles are pi over 3. Find the area of the sector, subtract from that area of the triangle, and you get the area of the segment. ठीक है, so that's what I'm going to do here. Area of the segment PQ, that's area of the sector minus the area of the triangle. Sector का area क्या होगा, half r square theta, half into radius का square, that's half into 4 square. Let me write down the formulas on the side. Sector का area क्या होता है, ये पास formula sheet में लिखे होते हैं. Area of sector is half r square theta. Area of triangle, I don't think it's given. You should know that. Area of triangle हम यहाँ पे कौन सा वाला use कर सकते हैं, we can use half AB sin C. ठीक है, ये दोनों formulas यहाँ पे use कर रहा हूँ मैं. Half r square, 4 square into the angle was pi over 3 minus the area of the triangle, that's half into AB. Which two sides I'm going to take? I'm going to take this side and this side, which are both 4. And the angle between them, so that's 4 into 4, and sine of the angle between them, that's pi over 3. यहाँ से मुझे area of segment मिल जाएगा. Keep in mind, we want exact area. Decimals में नहीं convert करना. Just evaluate this and see what you get. 16 over 2, 8. 8 pi over 3 minus 8 into sine pi over 3. जब उसने exact कहा होता है ना, don't do this whole thing on the calculator, step by step कर लें. Sine pi over 3 निकाल के उसको दिखा दें अलग से, ताकि उसको पता हो कि आपने exact फॉर्म इसके लिखी है. तो बाहर वाला पार्ट तो 8 evaluate हो गया, sin pi over 3 इसको लिख के दिखा दें. sin pi over 3 क्या होता है, आप बेशक कैलकुलेटर पे कर लें, that's okay. It's going to be square root of 3 over 2. Okay, and then you can simplify this. You can say that's 8 pi over 3 minus 4 square root of 3. This is area of one segment. Once you have this, now you can go back and put this there in that form जो हमने ऊपर किया था. I'm just going to bring it down to make some space there. ये जाके ऊपर input कर देते हैं. There were two segments, right? So 2 into this whole thing, that's 8 pi over 3 minus 4 square root of 3. ये हमने जाके वहां पे input कर दिया. And now we just have to simplify this and see what we get. 16 pi minus 4 pi minus 16 pi over 3 plus 8 square root of 3. Evaluate this and see what you get. 16 minus 4, that's 12. 12 minus 16 divided by 3, that turns out to be 20 over 3. So 20 pi over 3 plus 8 square root of 3, that's the area that we wanted. ये उसने show करने के लिए कहा था. All right.
So this was this part जहाँ पे आपको area calculate करना था. Any problems with this? This was another tricky part on this paper. Okay, let's move on. That was question number 8. Now let's do 9 and 10, and then we'll do the rest in order. Okay. Functions f and g are defined as follows. We've got these two functions, f of x equals x minus 2 whole square minus 4, and g of x equals ax plus 2. These are two functions that we're given. Where a is a constant, we have to state the range of f first. अच्छा, f function उसने already completed square form में रखा हुआ है. हमें पता है इसका minimum point किधर होएगा. इसका minimum point कहाँ पर होएगा? इसका minimum point is 2 and 4. That's the minimum point, right? 2 का आपने जो अंदर वाला part है उसका आपने sign flip कर दिया, बाहर वाला वैसे ही. Sorry, 2 and minus 4. So that should have been minus 4. बाहर वाले का sign वैसे रहने दिया. This is the turning point. Now, is it a minimum point or a maximum point? X squared the coefficient positive है, so it should be a minimum point. तो यहाँ पे हम जिसका ग्राफ बनेगा, that's going to look something like this. It's going to be this shape. ठीक है, लेकिन उसने आपको बताया हुआ इसकी डोमेन क्या है? X greater than or equal to 2. So the turning point is here. The turning point is 2 and minus 4. लेकिन function किस part में valid है सिर्फ? Right वाले part के अंदर जहाँ पे x is greater than or equal to 2. अब उस part की range कितनी है? आपको नजर आ रहा है minimum point y axis पे कितना आ रहा है? -4. You have to be above, equal to or above this value. So the range of f is therefore going to be f of x greater than or equal to -4. You can write it like this, or you can say y greater than or equal to -4. That's the range of this function. Okay. Now it says find f inverse of x. Again, you have the completed square form already. Quadratic अगर आपको inverse find करना हो, completed square form नहीं दी हो, तो आपको पहले square complete करना पड़ता है खुद से. यहाँ पे उसने already square complete किया हुआ है, so it's relatively straightforward. What you'll do is you'll start from the given function f of x equals x minus 2 whole square minus 4, and you'll say let f of x equals y. इसको आपने y से replace कर दिया. You get y equals x minus 2 whole square minus 4. And that gives you x minus 2 whole square equals y plus 4. You have to make x the subject now. Now for that, you'll take square root on both sides. You get x minus 2 equals plus minus square root of y plus 4. Remember, whenever we take square root, we have to put plus minus. Plus minus, aapne lagana hai. Okay? And now this gives you x equals 2 plus minus square root of y plus 4. And now we've got to think about whether we're going to choose plus here or minus here. ठीक है, इसमें से प्लस चूज करना है माइनस करना है. अब ये कैसे करते हैं? हम देखते हैं डोमेन का गिवन थी. उसने आपको बताया हुआ है कि x is greater than or equal to 2. That's what the domain is. Now, how are you going to get a value of x that is greater than or equal to 2 from this? 2 के अंदर कोई चीज प्लस करेंगे तो आपको 2 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, या माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू मिलेगी. माइनस करके तो 2 से छोटा नंबर आ जाएगा. वी वांट x greater than or equal to 2. You're going to get that if you use the plus sign. तो हम यहाँ पे plus sign use करेंगे. So it's going to be x equals 2 plus square root of y plus 4. And then you can write down the inverse function. The inverse function is going to be f inverse of x. Remember, you have to write it in this form. और ये x के terms में होना चाहिए. It's going to be 2 plus square root of x plus 4. That's your inverse. This is what we were looking for. ठीक है? Okay, let's move on. कभी कभी इसने यहाँ पे डोमेन पूछी होती है. यहाँ पे इसने इस क्वेश्चन में नहीं पूछी. अगर डोमेन पूछी हो, you have to remember range of the original function is the domain of the inverse function, and the domain of the original function is the range of the inverse function. Okay, so they are opposites of each other. Original function की range inverse की domain होती है, original function की domain inverse की range होती है. Okay. Yes, Abdul Moiz, you have to be able to find range and domain of composite functions. Range तो इतनी मुश्किल नहीं होती है उनकी, but उनकी composite functions की domain निकालना is quite tricky actually. That is part of the syllabus, yes. अच्छा, given that a equals -5/3, solve this equation f of x equals g of x. Okay, now what's that equation?
f of x equals g of x. f of x हमारे पास क्या है? That's x minus 2 whole square minus 4. That equals g of x. G of x is ax plus 2. a की वैल्यू उसने बताई हुई, a की वैल्यू आपको क्या यूज करनी है? a की वैल्यू यूज करनी है -5/3 -5/3x plus 2. ठीक है, so this is the equation that we've got. Left side को expand कर लेते हैं. X minus 2 whole square, that's going to be x square minus 4x plus 4 minus 4, and that equals this. And that gives us x square minus 4x plus 5/3x plus 2. And what does that become? That becomes x square. ये क्या आ जाएगा हमारे पास? -4 plus 5/3. Let's evaluate this. This is -7/3. -7/3x plus 2 equals 0. ठीक से multiply कर दें पूरे equation को, and that gives us 3x square minus 7x plus 6 equals 0. And now we've got to solve this equation. This is paper 1. You have to show the working for this. Working नहीं show करेंगे, you will not get marks. अच्छा, 3 और 6 तो मल्टीप्लाई करें 18 आता है. 18 के हम क्या कर सकते हैं? We can use 9 and 2, and that's going to work. If you are not comfortable with factorization, आप क्या करोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज इनपुट करके दिखा दोगे उसको, और फिर आप आंसर लिख सकते हो डायरेक्टली. That's okay. ठीक है, अदरवाइज आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो. इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी? You can say 3x square minus 9x plus 2x plus 6 equals 0, and that gives you 3x into x minus 3 plus 2. Oh, there's something wrong there. Minus 9x. So this doesn't work. Your factorization nahi chal sakti. I'm sorry about that. Yeah, it doesn't work. Minus 7x plus, वहाँ पे plus होना चाहिए था. 9 और 2 subtract होके आ रहे हैं. Factorization नहीं चलेगी. What else can we do here? और factorization कर सकते हैं यहाँ पे. 18 के factors क्या होते हैं? 6 and 3. That doesn't work. 5, 4, 3, 6. Apparently we can't factorize this. इसको हो जाना चाहिए वैसे. Is there anything wrong that we've done here? -5/3, because only 3 marks. इसको इतना लंबा होना नहीं चाहिए. अच्छा, a की वैल्यू में क्या इनपुट की थी? x minus 2 whole square minus 4 and then -5/3x plus 2. Okay, that's okay. Now we took that to the left side. x square minus 4x plus 4 वो cancel हो गया. x square minus 4x plus 5/3. अच्छा, ये 2 left पे लेकर आए. It should have been negative. ये minus हो जाना चाहिए था यहाँ पे. So this should have been negative as well. And when that becomes negative, we've got -18. Yeah, so now we can use that factorization. Now it works. X square, 3x square minus 9x plus 2x minus 6. And this gives us 3x into x minus 3 plus 2 into x minus 3. That equals 0. We get two factors. 3x plus 2 into x minus 3 equals 0. X equals -2/3 and x equals 3. Now, stop at this point. Stop at this point and remember हमने यहाँ पे कोई domain use की थी. यहाँ पे लिखा हुआ था x greater than or equal to 2. हम कौन सी equation solve कर रहे हैं? We are solving the equation f of x equals g of x. Function f तो valid ही तब है when x is greater than or equal to 2. Less than 2 values के लिए तो function x valid ही नहीं है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? We've got a value that's x minus 2/3. We will say this is not possible. Why? Because उसने कहा हुआ है कि x has to be greater than or equal to 2. This is going to be your only solution. अगर आप दोनों answers लिख दोगे यहाँ पे, you will lose 1 mark. Okay? So you've got to have your eyes open and keep checking कि अच्छा जो आपके पास answers आ रहे हैं, are they all valid? And you have to reject the answers that are not valid. Okay, so this is not possible. Okay, x was greater than or equal to 2. Okay, so x equals 3 is the only solution that we're getting here. Let's move on. Now it says given instead that g
of G of F inverse of 12 equals 62. Find the possible values of A. Now it's a composite function, but it's a relatively complicated composite function because में तीन functions आ गए हैं जिनको आपने composite function find करना है. Now you could either find an expression in terms of all of them, या तो आप ये कर सकते हैं, मतलब x की terms में कोई expression find कर लें. So you can find G of F inverse of X. जब वो expression find करें तो उसके अंदर पर जाके आप X की जगह पे 12 डाल दें. That's one way to do it. But it's going to be much simpler if you do it like this. It's going to be much simpler if you do it like this. You can say G of F inverse of 12. तो पहले आप F inverse of 12 evaluate कर ले और जो number है वो यहाँ पे input कर दें. That's going to be much easier. Okay, that's going to be much easier. Now, let's see what I mean by that. F inverse of 12, ये क्या चीज है? अच्छा, मैंने किया क्या यहाँ पे? आपने remember composite function में क्या करते थे? We would do one function at a time. सबसे जो अंदर वाला function होता था, innermost function, we would evaluate that first. सबसे पहले ये evaluate करेंगे. उसके बाद बाहर वाली bracket, उससे बाहर वाली, और फिर आप उससे बाहर वाला. Right? So we go step by step like this. That's what we're going to do here. We go step by step. पहले F inverse of 12 evaluate कर लेते हैं. We already have the F inverse function from part B. We know कि F inverse क्या था? F inverse of X was equal to 2 plus square root of X plus 4. This was the F inverse function. आपने F inverse of 12 find करना है, इसमें 12 input कर दें and see what that gives you. 2 plus square root of 12 plus 4, and that's 2 plus 4. This turns out to be 6. F inverse of 12 6 आ गया. अब यहाँ पे input कर दें. So now you've got something simpler. Now you have G of 6 that equals 62. ठीक है? ये आपने अंदर वाला function evaluate कर लिया. Now let's simplify this further. You can say you've got a bracket here like this. आप कह सकते हैं G of 6 that equals 62. अब आप G of 6 evaluate कर लें, right? G of 6 evaluate कर लें and see what that turns out to be. G of 6. G function क्या था? G function was ax plus 2. अब ये a की terms में आएगा. Remember, जो उसने a की value -5/3 दी थी, वो c part के अंदर दी थी. That's no longer valid. वो value आप यहाँ पे part D में नहीं use कर सकते हो. ठीक है? वो part C के अंदर दी हुई थी. यहाँ पे तो आपने a की values find करनी है फिर. You can't use those values. So G of X, क्या था आपके पास? It was ax plus 2. Write that function down first. Ax plus 2. इसमें 6 input कर दें. That gives you 6a plus 2. So now we have G of 6a plus 2 that equals 62. अब G of 6a plus 2 evaluate कर लें. यहीं पे कर लेते हैं. G function के अंदर x की जगह पे क्या input करना है? 6a plus 2 input करना है. So we have a into 6a plus 2 equals 62. हमने क्या किया है? इस function के अंदर x की जगह पे 6a plus 2 input कर दिया. And this is what we get. Now this is an equation that we have. It's going to be a quadratic equation. यहाँ से आप a की values निकाल सकते हैं. ठीक है? So this turns out to be 6a square plus 2a plus 2 minus 62 equals 0. Solve this equation. 6a square plus 2a minus 60 equals 0. That's 3a square plus a minus 30 minus 30 equals 0. Can we factorize this? 90 आता है. 90 के भी factors हमारे पास ऐसे हो सकते हैं. So 9 or 10, yeah, we can use 9 and 10. 9, yeah, that's going to work. 3a square plus 10a minus 9a minus 30. Again, if you find factorization difficult, quadratic formula में values input करें और answers लिखते हैं. That's okay. Achha, let's do the factorization. We have a into 3a plus 10 here minus
3 into 3a plus 10. And we get two factors, a minus 3 and 3a plus 10. A equals 3 or a equals minus 10 over 3. Now again, let's check क्या दोनों वैल्यूज हो सकती हैं. उसने क्या कहा था, find the possible values of a. वो आपको वैसे ही बता रहे हैं कि a से एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी. आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, they are both going to be valid. So a equals 3 or 10 minus 10 over 3. ये दो वैल्यूज आ रही. ठीक है, so that's your final result. Let's move on. So this was this part D. It was 5 marks. ठीक है. Let's move on to question number 10. Now we've got the equation of a circle. We have to find the x coordinates of the points A and B where the circle intersects the x-axis. Okay, x-axis को intersect करता है, basically x-intercept find करना है. X-intercept के लिए क्या करते हैं, y की value को 0 input कर देते हैं. So that's what we're going to do here. Let's input y equals 0. X-intercept इसी तरह find करते हैं. y 0 input कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा x square plus 0 square minus 4x plus 6 into 0 minus 77 equals 0, and that gives us the quadratic equation x square minus 4x minus 77 equals 0. Okay. Now again, this is paper 1. It's necessary to show the working for solving this quadratic equation. Can we factorize this? 77 के क्या हो सकते हैं, 7 and 11. Yeah, so that's going to work. X square minus 11x plus 7x minus 77 equals 0. You can have the factorization now. X into x minus 11 plus 7 into x minus 11. We get two factors, x plus 7 into x minus 11 equals 0. X equals minus 7 or x equals 11. उसने कहा था x coordinate find करें a और b के. We don't know कि कौन सा a है कौन सा b है. बस आप इसी तरह छोड़ दें. x equals minus 7 और x equals 8. यही आपको दो वैल्यूज यहाँ पे चाहिए. ठीक है. अच्छा, now it says find the point of intersection of the tangents to the circle at a and b. Tangents के points of intersection निकालना है. तो पहले तो आपको tangents निकालने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं वो कहाँ पे intersect करते हैं. Right? So what are we going to do here? We will find the equations of the two tangents. ठीक है. And then we can find a point of intersection. अब ये equation of tangent हम किस तरह से निकालें? What's the method that we can use here? We've got the points now. We know the points A and B. हम किसी को भी A कह रहे हैं, let's say इसको हम A कह देते हैं -7 0 और B हम कह देते हैं 11 0 को. How do you find equation of a tangent to a graph? How do you do that? डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था? डिफरेंशिएशन में करते थे हम डेरिवेटिव फाइंड करते थे, उसमें वैल्यू ऑफ एक्स इनपुट करते थे, उससे हमारे पास वो आ जाता था, ग्रेडियंट आ जाता था कर्व का. अब इस पे डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम करेंगे तो हमें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी. इसमें हमें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी जो बेसिकली पेपर 1 में होती नहीं है. अगर आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं. इफ यू वांट यू कैन डू दैट, बट what that means is there has to be another way as well, क्योंकि implicit differentiation तो paper 3 का part है, but paper 1 में तो होता नहीं है. What else can we do here? It's a circle. Circle की equation है ना, circle की equation है, तो इसमें आसान तरीका क्या है, आप radius का gradient निकाल लो, tangent उसके perpendicular होता है. It's sometimes helpful to draw a rough figure, उससे आप देख लें. So it's going to be a circle that let's say looks like this. ये circle है आपका, ठीक है, और इसके दो x intercepts हैं, which may be like this. Let's say this is -7 and this is 11. इन दोनों पे जो tangents हैं, they are meeting at some point. Let's draw those tangents roughly. ये एक tangent ये इस तरह जा रहा है, एक tangent इस तरह जा रहा है. तो ये फिगर बना के आपके लिए काफी आसान हो जाता है. ठीक है. अब इससे आपको एक चीज ये भी पता चल गई, इसका x कोऑर्डिनेट तो आपके पास डायरेक्टली आ गया. टेंजेंट्स का x कोऑर्डिनेट आपके पास डायरेक्टली आ गया. वो किस तरह से?
you know that these are two tangents coming from a single point. सेम पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट यहां तक इक्वल है, तो ये बेसिकली बिल्कुल इसके ऊपर आपका ये जो पॉइंट होएगा 7 और 11, -7 और 11 का सेंटर विच इज 2, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होएगा। ये आपके पास डायरेक्टली आ गया। देखिए सिर्फ फिगर ड्रॉ करने से, जो शायद आपको वैसे नहीं समझ आती, एक रफ फिगर बनाने से आपको पता चल गया कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 2 होएगा। ठीक है, और आपके जो सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 ही होएगा। सर्कल का जो सेंटर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक तो हम सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं। ट्रायंगल की हाइट निकाल लें। हाउ वुड यू डू दैट? ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालें? सो यू आर सेइंग कि अच्छा वी नो दैट दिस लेंथ इज 9, ठीक है, बट डू वी हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन इन द ट्रायंगल? और तो कुछ भी नहीं पता हमें, एंगल तो नहीं पता कोई। एंगल पता होता तो फिर हम कर सकते थे, राइट? वी कांट डू दिस, ये नहीं कर सकते, नॉट वर्क। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? लेट्स डू दैट फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ द सर्कल वाज x square plus y square. Just to rearrange that, x वाले टर्म्स इकट्ठे लिख लेते हैं, x square minus 4x and then y square plus 6y and I have 77 on the other side. ये मेरे पास इक्वेशन है, मैंने बस इस फॉर्म में रख लिया रीअरेंज करके। I want the center of the circle. उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेता हूँ। इसमें स्क्वायर कंप्लीशन बहुत आसान होती है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 1 होता है, तो स्क्वायर कंप्लीट करना इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे? 4x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है, 4 को हाफ किया, 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। इधर 6 को हाफ किया, 3 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। Now these three terms are going to give us a perfect square. These three terms are going to give us a perfect square. This is going to be x minus 2 whole squared minus 4. ये बाहर वाला 4 आपके पास इधर अलग से आ गया. And then you have y plus 3 whole square from these three terms. And this 9 outside. And you've got 77 on the other side. And that gives you x minus 2 whole squared plus y plus 3 whole squared equals 77 plus 13 and that is 90. इससे आपको क्या पता चल गया? आपको रेडियस पता चल गया। रेडियस is going to be 2 and minus 3. ये अंदर वाले नंबर्स के आपने साइन फ्लिप कर देने हैं बस। 2 and minus 3. Sorry, not radius, center. Center is going to be this. And radius is going to be square root of 90. ठीक है, राइट पे जो आपके पास नंबर है उसका स्क्वायर रूट, that is going to be the radius. अच्छा, now how does that help? हमारे पास यहाँ पे इस फिगर के ऊपर सेंटर आ गया इसका, which is 2 and minus 3, right? अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं? हम एक्चुअली इक्वेशन की टेंजेंट की इक्वेशन निकाले बगैर भी हम इसको कर सकते हैं। किस तरह से? अब हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी गॉट टू लेंथ्स, राइट? Yeah, so now we can do it without finding the equation of the tangent. हम क्या करेंगे? हम कहेंगे we've got a triangle here that looks like this. This is a right angle triangle. क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, so it's a right angle triangle. What lengths do we know? अच्छा नहीं, do we know any lengths? Do we know any lengths? हमें ये पता है स्क्वायर रूट ऑफ 90 है, और हमें क्या पता है, और हमें हाइट नहीं पता। अच्छा ठीक, that still doesn't work. हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। लेट्स फाइंड दैट। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं, कोई भी एक टेंजेंट निकाल लें।
let's try this one. Let's call the center something. The center को हम कोई नाम दे देते हैं. This point was, let's say, A. This point was B. Center को हम C कह देते हैं. ठीक है? Let's find the gradient of AC. AC का gradient निकाल लें. Gradient of AC. What's that going to be? That is going to be C point क्या है? 2 and minus 3. AC gradient is minus 3 minus 0 divided by 2 minus minus 7. That's 2 plus 7. And that gives us minus 1 over 3. ये आपके पास AC का gradient आ गया, which is the radius of the circle. ठीक है? तो tangent का gradient क्या होगा? Let's call this point something as well. इसको मैं x कह देता हूँ. AX का tangent का gradient क्या होएगा? It's going to be negative reciprocal of this, which is going to be 3. Gradient of AX, जो basically मेरा tangent है, that is negative reciprocal of the sign change और उसका reciprocal, that turns out to be 3. अब AX का मेरे पास वो भी आ गया, gradient भी आ गया, एक point भी है मेरे पास, AX की equation लग सकता हूँ. ठीक है? AX जो मेरे पास tangent है, मैं क्या करूँगा उसका? I know the gradient, that is 3. I know a point, that is A, which was minus 7, 0. Equation लिख ले, y minus y1, y minus 0 equals m into x minus x1. So x minus minus 7, that becomes x plus 7. Y equals 3x plus 21. ठीक है? ये मेरे पास AX की equation आ गई. Now, if I wanted, I could find the other tangent as well and इनको simultaneously solve करता. However, it's much simpler than that because we know the x coordinate of x. X coordinate आपका 2 है, x का. How did we find that, Mohima? We basically said A and B are at the same level, same horizontal level. तो जिनका जो point of intersection आ रहा है tangents का, that's basically right in the middle of them. वो A और B के बिल्कुल दरमियान में है. A और B के बिल्कुल center में है. A और B का center क्या है? minus 2 और 11. Sorry about that. Yeah. A और B का center क्या है? minus 7 और 11 का midpoint देख लें. That turns out to be 2. So ये जो center है हमारे पास, उसका x coordinate हमारे पास 2 आ गया. So we already have the x coordinate of the point of intersection. तो हम क्या कर सकते हैं? हम x की value इस tangent के अंदर 2 input कर दें. क्योंकि ये x point इस tangent पे lie करता है ना, tangent पे lie करता है point x, उसमें x की value 2 input कर दें, and see what you get. You get y equals 3 into 2 plus 21, and that's 27, and that's the y coordinate of that point of intersection. The point is 2 and 27. ये आपका point आ. All right, this was the point of intersection that we were looking for. All right, let's move on. Let's move on to the next one. Now I've got question number 11. This is not that difficult, I think, but let's do this and then we do the remaining questions quickly, which are all easier now. The equation of a curve is y equals 2 into square root of 3x plus 4 minus x. Find the equation of the normal to the curve. Normal की equation निकालनी है at the point 4, 4. Giving your answer in the form y equals mx plus c. अच्छा, normal की equation कैसे आती है? आप क्या करोगे? आप सॉरी, कर्व का डेरिवेटिव फाइंड करोगे, कर्व का डेरिवेटिव फाइंड करोगे और वो आपको ग्रेडियंट दे देगा कर्व का, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लेंगे तो नॉर्मल का ग्रेडियंट आ जाएगा. दैट्स व्हाट वी डू हियर. वी से y इक्वल्स 2 into square root of 3x plus 4 minus x. ये आपकी इक्वेशन है, इसको पावर फॉर्म में लिख लें पहले. This becomes 3x plus 4 whole raised to power 1 over 2. What's the derivative of this? dy over dx. That's going to be 2 as it is. जो constant है बाहर वो तो वैसे ही रहेगा. Power आके multiply हो जाएगी. It becomes 2 into 1 over 2. Subtract 1 from the power.
3x plus 4, 1 over 2 में से 1 subtract किया, what do you have? Minus 1 over 2, and then you multiply by the derivative of what is inside the power here. 3x plus 4 के derivative से multiply कर दें, that's going to be 3. That's the derivative of this first term. Minus x का derivative क्या हो जाएगा? -1. So we found the derivative. अब क्या करें? इस point का x coordinate इसके अंदर input कर दें. You say x equals 4, ये input कर दें. What do we get from that? We get 3 into 4 plus 4 whole raised to power minus 1 over 2 into 3 minus 1. Let's evaluate this and see what that gives us. 12 plus 4, that's 16. 16 raised to power minus 0.5, that is 1 over 4. 1 over 4 into 3 minus 1. So 3 over 4 minus 1, what's that going to be? That's going to be minus 1 over 4. ये आपका ग्रेडियंट आ गया कर्व का इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है? नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? Gradient of normal, that's going to be negative reciprocal of this, which is 4. ठीक है? Tangent में नहीं करते ये. A lot of people end up doing this when they're finding the equation of the tangent as well, कि उसका negative reciprocal कर देते हैं. Tangent के लिए negative reciprocal नहीं करना होता. It's only for the normal. हमने इसका negative reciprocal कर दिया, gradient आ गया. अब उसने क्या कहा? equation लिखनी है. We've got the point, we've got the gradient, equation लिख दें. Point क्या था? 4, 4. Y minus y1 equals m into x minus x1. So that's y minus 4 equals m, that's 4 into x minus 4. That's the equation. अगर उसने आपसे कोई specific form नहीं मांगी हो, it's okay to just leave it like this. आप इस तरह से छोड़ सकते हो. But यहाँ पे उसने कहा है y equals mx plus c form चाहिए, तो आपको उसमें convert करना पड़ेगा. एक मार्क इसमें conversion का होगा. So what does this become now? Y equals 4x minus 16 plus 4. That is y equals 4x minus 12. And that's the equation that you're getting. Okay. Find the coordinates of the stationary point. Stationary point में turning point find करना है. Turning point पे क्या होता है? Derivative 0 होता है. We've already found the derivative in the previous part. Let me just copy that down here. dy with dx क्या हमने निकाला है? That's 3x plus 4 whole raised to power minus 1 over 2 into 3 minus 1. ये हमारा derivative था. Stationary point चाहिए, इसको 0 से equate कर देते हैं. What does that give us? इसको denominator में ले जाता हूँ मैं. 3 over 3x plus 4 whole raised to power 1 over 2 and then minus 1. ठीक है? Let's take 1 to the other side. And that gives us 3 over 3x plus 4 whole raised to power 1 over 2. ये जाके multiply कर दें उधर. And that becomes 3x plus 4 whole raised to power 1 over 2 equals 3. Now to get rid of the power 1 over 2, we can square both sides. दोनों sides को square कर दिया. That gives us 3x plus 4 equals 9. 3x equals 5 and x equals 5 over 3. That's the x coordinate that we're getting here. उसने कहा है find the coordinates. यानी x coordinate भी चाहिए, y coordinate भी चाहिए. तो इसका corresponding y coordinate क्या होगा? How do you find that? You've got the curves equation given. उसमें जाके input कर दें. Y equals 2 into square root of 3x plus 1, 3x plus 4 minus x. ये आपकी equation थी, उसमें x की value input कर दें. That gives you 2 into square root of 3 into 5 over 3 plus 4 का square root minus 5 over 3 outside. अंदर आपके पास 1 आ रहा है square root के अंदर, so that's no 9 आ रहा है, sorry. 2 into 9, 3 and 3 get cancelled, so you got 9 inside the square root minus 5 over 3. That's going to be 6 minus 5 over 3. वो evaluate कर लें, that's 18 minus 5 over 3, which is 13 over 3. The coordinates that we were looking for, they are going to be 5 over
3 and 13/3. इसको ऐसे ही छोड़ दें, इसको डेसिमल्स में ना कन्वर्ट करें बिकॉज डेसिमल में एग्जैक्ट नहीं आएगा. ठीक है, दिस इज बेटर. You just leave it like this. These are the coordinates. ठीक है, वालेकुम अस्सलाम. Let's move on to the next part. Determine the nature of the stationary point. Nature of the stationary point, यानी कि whether it's maximum or minimum. क्या करते हैं, दोबारा differentiate कर लें. We've got the derivative dy over dx, that is 3x plus 4 whole raised to power minus 1 over 2. And we had 3 outside as well. Minus 1. Let's find the second derivative. 3 as it is, power multiply होगी. Power में से 1 minus कर दिया. That becomes minus 3 over 2. अंदर वाले के derivative से multiply कर दिया. 3x plus 4 का derivative, that is 3. Derivative of 1 is 0. So वो 0 हो गया. What does that give us? Minus 9 over 2 into 3x plus 4 whole raised to power 3 over 2. ठीक है? And now what you've got to do is, you've got to input the value of x. ये आपको input करना है अब और वो value दिखानी है. So now you'll say put x equals 5 over 3 and see what the second derivative turns out to be from that. X equals 5 over 3 input किया. क्या आता है हमारे पास? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू तो आपके पास नेगेटिव ही आ जाएगा, तो आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो कि नेगेटिव आ रहा है, राइट? और यू कैन राइट डाउन द एग्जैक्ट वैल्यू इफ यू वांट, बट इट्स प्रीटी ऑब्वियस यहाँ पे कि नेगेटिव आ जाएगा, तो आप इनपुट करोगे. इफ यू वांट यू कैन जस्ट ट्राई दैट. 9 3 का क्यूब 9 over 54. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 1 over 6. ये आपके पास minus 1 over 6 आ गया. Since this is negative, आप कहोगे you've got a maximum point. ठीक है, second derivative जब negative होता है you've got a maximum point. Second derivative जब positive होता है you have a minimum point. ठीक है, या का maximum point है. Let's move on. It says find the exact area of the region bounded by the curve, the x-axis, and the lines x equals 0 and x equals 4. Now that's a bit tricky. Why? Because we are not given the curve. We're not given the equation of the curve, right? Now, if you want to understand it a bit better, it might be a good idea to have a rough sketch of what the figure might look like. Okay, it's not necessary, of course, but it will help your understanding. क्या करें? आपको shape तो नहीं पता उसकी? It doesn't matter. आप बस सोच लें कि आपको क्या चाहिए. x equal 0 line कौन सी होती है? X equal 0 line is basically this line. ठीक है? X equals 4 line, that's this line. ये line. इन दो lines के दरमियान में area है. Bounded by the curve in the x-axis. अब curve इन दोनों points के दरमियान में कहाँ पर है? 0 और 4 के दरमियान में curve आपके पास किधर है? Where was the curve? Yeah, this is the curve. 0 और 4 के दरमियान में आपने रफ स्केच ही बनाना है. Doesn't really matter के exact values क्या हो. What matters is आप ये देखें turning point आपका क्या है. Turning point आपके पास क्या आ रहा है? ये maximum आ रहा है. Turning point आपके पास maximum आ रहा है. हमने प्रूव किया कि वो मैक्सिमम है और टर्निंग पॉइंट कहाँ पर आता है? 5 over 3 के ऊपर. अच्छा, अब 5 over 3 के ऊपर यानी यहाँ पे आपकी कर्व इस तरह से कुछ होगी. ठीक है, इस तरह से टर्न ले रही होगी. नाउ द ओनली reason why I'm saying it's better to draw a rough sketch is that you want to see कि आपकी कर्व x axis के नीचे तो नहीं जा रही. क्या ये कर्व इस तरह से तो नहीं जा रही नीचे? बिकॉज अगर वो कर्व नीचे चलेगी तो नीचे वाला एरिया तो नेगेटिव आ जाएगा, तो वो फिर मसला होता है वहां पे. ठीक है, तो आप क्या करोगे? यू जस्ट चेक दिस कि नीचे जा तो नहीं रही है कर्व के. आप कैसे चेक कर सकते हो? 0 पे वैल्यू चेक कर लो. x की वैल्यू 0 इसके अंदर इनपुट करो, क्या आता है आपके पास? फिर इनपुट x equals 0, that gives you 2 into
2, that's 4. X equals 0 पे आपकी 4 वैल्यू आ रही है, so that's positive. X equals 4 इनपुट करते हैं इसके अंदर, that gives you 8 minus 4, वो भी आपके पास 4 वैल्यू आती है. So what that basically tells you कि अच्छा ये कर्व x axis के नीचे नहीं जाती इस पार्ट के अंदर, it's going to be something like this. Now it's pretty straightforward to find this area. ठीक है, ये आपने एरिया फाइंड करना है. दिस इज द एरिया दैट वी आर लुकिंग फॉर. आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, but this is going to be better in case there is a complication कि वो कर्व आपकी नीचे भी जा रही होती एक्स एक्सिस पे, राइट? तो आपको खुद से फिगर आउट करना होता. वी नेवर नो, राइट? नाउ वी हैव अ प्रेसिडेंस विद दैट मैकेनिक्स पेपर. उसने बताया नहीं क्लियरली और दरमियान में कुछ और हो रहा है जो आपको खुद से फिगर आउट करना है. सो या, this is the curve. The curve was equation क्या थी curve की? Let me write that down here. Y equals 2 into 3x plus 4 whole raised to power 1 over 2 minus x. ये आपके पास curve है. Area under the curve find करना है. 0 4 आप limits हैं, integrate करें, limits input कर दें. Formula क्या होता है? Area between the curve and the x-axis. The formula that we have is ax equals integral of y dx with limits a to b. Okay, let's figure this out. Area between the curve and the x-axis, this is going to be 0 to 4, and the function is 2 into 3x plus 4 whole raised to power 1 over 2 minus x. Is going to integrate करना with respect to x. Let's integrate the first term. 2 as it is, वो constant है. 3x plus 4, ये जो अंदर वाला पार्ट है लीनियर है, जिसको हम पावर वाला रूल लगा सकते हैं. 1 over 2 में 1 ऐड कर दिया, 3 over 2 हो गया. Divide by that increased power. So we are adding 1 to the power, and then जो power आपके पास बन जाएगी उसमें से आप उसको 3 over 2 उस power से divide कर देंगे. And you also divide by the derivative of what is inside the power, that is 3. That's the derivative, that's the integral of the first thing. X का integral क्या होएगा? X square over 2. And now you input the limits डाल दें 0 से लेकर 4 तक, and you get a result from that. ठीक है, 4 input करेंगे तो क्या आएगा? 2 into अच्छा, लिमिट डालने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, दैट्स एक्चुअली बेटर. आपकी कंफ्यूजन थोड़ी कम होगी. 0 से 4 तक इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये जो नीचे वाला 2 है, दैट्स गोइंग टू गो टू द न्यूमरेटर एंड इट्स गोइंग टू बिकम 4 into 3x plus 4 whole raised to power 3 over 2. In the denominator, we've got 3 into 3, that's 9. And now we can input the limits. Limits input करके दिखाना जरूरी होता है, otherwise आपको marks नहीं मिलेंगे पूरे. 4 input करें. 4 into 3 into 4 plus 4 whole raised to power 3 over 2 divided by 9 minus 4 squared over 2. ये 4 input कर दिया. Subtract from that the case when you input 0, that gives you 4 into 0 plus 4 whole raised to power 3 over 2 divided by 9 minus 0. That's what you've got. दोनों brackets को अलग-अलग evaluate कर लें. That's going to be less prone to error. What does that give us? Give you 4 into 16 k power 1 over 2. That's 4 cube. 4 into 4 cube divided by 9 minus 8. That's the first bracket. I'm getting 184 over 9 here. Please correct me if I'm wrong. In the second bracket, I'm going to get 4 into 8 divided by 9. That is 32 over 9. And that's going to give us the area 184 minus 32 divided by 9. That is 152 over 9. Okay, that's the area that we have. That's what we were looking for. Okay, that was question number 11 from this paper. Now, the rest of the questions are relatively straightforward. Let's quickly complete them, the rest of them. Okay, let's start with question number 1 here. We've got the equation of a curve that is such that dy by dx is 3 over x raised to power 4 plus 32x cubed. Derivative दिया हुआ है. उसने कहा है find, it is given that the curve passes through this point, find the equation of the curve. क्या करना है? Integrate करना है. उसमें plus c आ रहा होगा. C की वैल्यू के लिए आप ये point use कर लोगे and you find the equation.
Let's integrate. सबसे पहले इसको power form में लिख लेते हैं. dy over dx is 3x raised to power -4 plus 32x cubed. Let's integrate. 3x raised to power -4, power में 1 add कर दिया, -4 plus 1 is -3, divide by that increased power, plus 32x raised to power 4 over 4. Okay, now that gives you y equals minus 1 over x cubed. 3 or 3 cancel हो गया. 32 over 4, that is going to be 8x raised to power 4, but do not forget the plus c. अगर आप सिर्फ ये करेंगे इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे सिर्फ. You've got to find the value of c now. c कैसे find करें? 1 over 2 and 4, you've got a point there. वो input कर दें इसके अंदर. And you get the value of c from that. 4 equals minus 1 over 2 whole cube plus 8 into 1 over 2 whole raised to power 4 plus c. What does that give us? 4 equals, ये 2 cube जो नीचे ये ऊपर आ जाएगा, ये -8 बन जाएगा, plus 8 over 2 raised to power 4, that's 16 plus c. c की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी. You can evaluate that. That's 4 plus 8 minus 1 divided by 2. I'm getting 23 over 2 from this. आप 23 over 2 लिख सकते हो या 11.5 if you want. लेकिन equation के अंदर it's better to use fractions. 23 over 2 आपके पास c आ गया. अब क्या करेंगे? इस c की वैल्यू उस equation में input कर देंगे and you'll have your final result. So your curve is y equals minus 1 over x cubed plus 8x raised to power 4 plus 23 over 2. This is the curve that we were looking for. Okay, that was the first question. Let's move on. Now it says the sum of the first 20 terms of an AP is 404 and the sum of the first 40 terms is 1410. Find the 60th term of the progression. अच्छा, उसने क्या बताया है? उसने आपको बताया कि ये AP है. एक तो आपने ये चीज ध्यान रखना है. AP की जो sum of the first 20 terms हैं, that is 405. Sum of the first 20 terms is 405. Sum of the first 40 terms is 1410. ये दो चीजें उसने दी हुई हैं. Now, what's the first sum formula for an AP? Now, be very careful here. You're using the right formulas. इसमें बहुत सारे लोग mix कर देते हैं. Where are the formulas? Yeah. So these are the formulas. AP के formulas हमारे पास ये होते हैं. This is an AP. ये sum के formulas हैं. 2 formulas possible हैं. एक में last term आ रही होती है, एक में last term नहीं आ रही होती. हमें last term नहीं पता तो हम last term वाला नहीं use करेंगे. हम n over 2 वाला हम 2a plus n minus 1 over d, n minus 1 into d वाला formula use करेंगे, which is the second one written here. ठीक है, because हमें last term नहीं पता, वो हम नहीं use कर सकते इसलिए. Let me write down that formula on the side here. So we can, or let's write that here. Sn equals n over 2 into 2a plus n minus 1 times d. ये आपके पास sum का formula. दोनों के ऊपर apply कर दे, 2 equations आ जाएंगी. We'll find the values of a and d from that. ठीक है. उसके बाद फिर आप 60th term find कर सकते हो using the term formula. Let's make 2 equations. S20 equals n, that's 20 over 2 into 2a plus n minus 1, and 20 minus 1, that's going to be 19 into the difference. Sum 20 to 20 terms kya tha? 405. We get 10 into 2a plus 19d. And that gives us 20a plus 190d equals 405. पूरी इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर दें, that gives us 4a plus 190 divided by 5, that's 38. 38d and 405 divided by 5 is 81. This is one equation that we've got. ठीक है, दूसरी इक्वेशन निकाल लें. S40 किसके इक्वल है? S40 is 40 over 2 into 2a plus 40 minus 1, that's 39, 39d. S40 is 1410. So you've got 20 into
2a plus 39d. Let's multiply this as well. That gives us 40a plus 39 into 20. That is 780 times d equals 1410. Let's see if we can simplify this. 10 से divide कर सकते हैं. That gives us 4a plus 78d and 141. This is the second equation. ये दो equations आ गई. इसमें सबसे ज्यादा जो मसला होता है वो अरिथमेटिक एरर्स का होता है. So you got to be very careful कि आप साइन एरर्स नहीं कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन एरर्स नहीं कर रहे हो, ब्रैकेट्स को सही तरह से यूज करना है. अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है इन दो इक्वेशंस को. ठीक है. Now it's going to be much simpler to use elimination here rather than substitution. The reason is you got 4a here, 4a here. Elimination से बहुत जल्दी हो जाएगा, errors के chances कम होंगे. So you say 81 equals 4a plus 38d. That's one equation. 141 equals 4a plus 78 times d. इसको अगर मोटा लिख देता हूँ तो नीचे वाली छोटी आ जाएगी. That's better. This is what I have. Now what I can do is I can subtract the lower equation from the upper equation. नीचे वाली equation को subtract कर दिया, उसके साइन चेंज कर दें आप. ठीक है. क्या होएगा? 4a and 4a get cancelled and you're left with 141 minus 81. That's 60. 60 equals 78 minus 38. That is 40 times d. d equals 1.5. देखें एक स्टेप में आपका हो गया. Substitution might make you make some careless errors here. उनके उसमें ज़्यादा थोड़ी सी complication आ जाएगी. This is d. अब किसी भी equation में input कर दें, you'll find the corresponding value for a. First में input कर देते हैं. 81 equals 4 times a plus 38 into 1.5. You can solve this and find the value of a from this. Now I'm just going to do this here. 81 minus 38 into 1.5 divided by 4, and that's 6. A turns out to be 6 for me. A की value मेरे पास 6 आ गई. So I've got A, I've got D. अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है find the 60th term. अब term formula क्या होता है AP का? वो भी आपको दिया होता है फॉर्मूला शीट के अंदर. I'm going to write that here. TN फॉर्मूला शीट में UN लिखा होता है. It's the same thing, doesn't really matter. A plus N minus 1 times D. ये आपने O levels में भी किया हुआ है वैसे तो. A is 6 plus N हमें कौन सी टर्म चाहिए? 60th terms. N की जगह पर 60 डाल दें. minus 1 times the difference. Difference is 1.5. Evaluate this. You'll get your result. 6 plus 59 into 1.5. That gives me 94.5. That is the 60th term. Okay, so that's what we were looking for. ये हमारे पास आ गया. ठीक है, let's move on to the next one. Question number 3. Find the first term and first 3 terms in the expansion of this thing. 3 minus 2x whole raised to power 5. This is simple binomial. Binomial का formula भी आपके पास formula sheet में दिया होता है. This is the one that we're going to be using in paper 1. N1, N2 जो लिखे हुए हैं, this is basically NC1, NC2, NC3. ये उसी को लिखने की एक और form है. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. The formula that we've got is, I'm going to write that inside here. यहीं पे लिख लेते हैं. In fact, I've got A plus B whole raised to power n. That's equal to A raised to power n plus NC1, A raised to power n minus 1 into B plus NC2 into A raised to power n minus 2B square, and so on. I've got the first 3 terms. ये 3 terms मुझे चाहिए sir. Let's expand that now. 3 minus 2x whole raised to power 5. Now let's compare with the formula. A की जगह पे 3 आ रहा है. B की जगह पे I've got minus 2x. पूरा consider करना है. And in place of n, I've got 5. If you want, you can just write that on the side as well. कि A क्या represent कर रहा है? A is representing 3. B की जगह पे minus 2x है. N की जगह पे 5 है. Formula में values input कर दें. And then just evaluate that. Okay. A raised to power n, that's 3 raised to power 5 plus 5C1 into 3 raised to power 4 into B, that's minus 2x, minus sign को नहीं भूलना यहाँ पे, plus 5C2 into A, which is 3 whole raised to power
3 into minus 2x ka whole square, and that's it. These are the three terms that you've got. 3 raised to power 5 आपको क्या देता है? 3 raised to power 5 gives you 243. 5c1 is 5. 3 raised to power 4 is 81 into minus 2x. 5c2 is 10, I think. Yes, 5c2 is 10. 3 cube is 27. Minus 2x ka whole square. अब ये positive हो जाएगा. That's going to be 4x square. And then you can write down the final thing. 81 into 10, that's 810 x plus 270 into 4, that is 1080 x square. These are the first three terms that we were looking for. Okay, so that's easy 3 marks. ये आपके पास तीनों terms आ गए. Okay, let's move on. Now it says, hence find the coefficient of x square in this expansion. अच्छा ये कौन सी expansion है? First part में क्या था? 3 minus 2x whole raised to power 5. You've got 3 minus 2x whole raised to power 5 here as well. And then that's being multiplied by 4 plus x whole square. अच्छा 4 plus x whole square को तो पहले evaluate कर लेते हैं. 4 plus x whole square क्या होएगा? It's going to be, this is a plus b whole square, right? Which is a square plus 2ab plus b square. 4 का square is 16. Plus 2 into 4 into x, that's 8x. Plus x का square, that is x square. ये आपके पास 4 plus x का whole square हो गया. That's multiplied by 3 minus 2x whole raised to power 5. इसकी first three terms हमने ऊपर निकाली हैं. हमें वही चाहिए because we are only concerned about the term in x square. बाकी तो हमें नहीं चाहिए. So I'm going to just write those three terms here. 243 minus 810 plus 1080 x square. Okay. And now we are looking for the term in x square. या तो आप पूरा expand कर लें, that's going to be 9 terms. It's going to be better to think about it and see कि आपकी x square वाली terms कैसे आएंगी. x square वाली terms आपके पास कैसे आएंगी. So आप कौन सी term को किससे multiply करोगे तो आपको x square मिलेगा, right? So that's what you think about. 16 को किससे multiply करेंगे तो x square मिलेगा. 16 को हम 1080 x square, 1080 x square से multiply करेंगे. Constant को x square वाली term से multiply करेंगे. 8x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको हम माइनस 180x से मल्टीप्लाई करेंगे. x को x से, फिर हमारे पास x स्क्वायर आएगा. और ये जो x स्क्वायर है इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. ये 3 मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देंगी? ये हमें x स्क्वायर वाली टर्म्स देंगी. बाकी हमें पूरा इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ ये 3 मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. We don't need to evaluate the whole thing. So what do we have? We've got 16 into 1080x square, and we've got 8x into minus 810x, and we've got x square into 243. ये तीन evaluate कर लें. 1080 into 16, that is 17. These are very large numbers. 17280 minus 8 into 810, that is 6480. And then we have 243x squared. तीनों को add कर लें. 17280 minus 6480 plus 243. I'm getting 11,043 x square. उसने पूछा coefficient of x square. तो आप क्या कहेंगे? The coefficient is coefficient of x square is 11,043. अगर उसने term in x square पूछा हो, फिर आप ये पूरा लिख दोगे, फिर आप x square के साथ लिख दोगे. ठीक है? That's the result. That was question number 3. Let's move on. Question number 4 हमने कर लिया पहले. Let's look at 5 now. The 5th, 6th, and 7th terms of a GP are 8k, minus 12, and 2k respectively. So now we've got a geometric progression. दोबारा से series का question आ गया, sequences का question आ गया. It's a GP now. The first, so this is T1. No, sorry, 5th. The 5th, 6th,
and 7th. These are the three terms that we're given. These are 8k, minus 12, and 2k. Given that k is negative, find the sum to infinity of the progression. अच्छा, sum to infinity find करना है हमें. Sum to infinity का formula क्या होता है? For a GP, that's a over 1 minus r. ये formula sheet में लिखा होता है. a over 1 minus r. आपको क्या चाहिए? आपको first term चाहिए और आपको रेशियो चाहिए. ये दो चीजें जब आपको मिलेंगी फिर आप sum to infinity find कर सकते हो. Now let's use the given information to find a and r first. अच्छा, you've got three consecutive terms. जीपी में क्या होता है? रेशियो कांस्टेंट होती है. रेशियो कांस्टेंट होती है. आर आपके पास आता कैसे है? रेशियो जो आपकी आर होती है. हाउ डू यू फिगर दैट आउट? उसका फॉर्मूला क्या होता है? इट्स द नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म. यही होता है ना. तो फॉर एग्जांपल आप 2k को डिवाइड कर सकते हो -12 से, वो आपकी रेशियो आ जाएगी. या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप -12 को डिवाइड कर दो 8k के साथ, वो भी आपकी रेशियो आ जाएगी. तो बेसिकली आपके पास एक इक्वेशन बन सकती है यहाँ पे, क्योंकि रेशियो इज इक्वल टू बोथ -12 over 8k. ये भी कर सकते हैं नेक्स्ट डिवाइडेड बाय प्रीवियस. ये भी कर सकते हैं कि 2k को -12 से डिवाइड कर दें. दैट इज ऑल्सो द रेशियो. सो वी कैन मेक एन इक्वेशन फ्रॉम दिस. हम इन दोनों को इक्वेट कर लें. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. लेट्स सी व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस. Cross multiply -12 into -12, that's 144. 8k into 2k, that is 16k square. And that gives us k square equal to 9. Square root ले लें, k equals plus minus 3. अब उसने कहा है k is negative, तो आप negative value consider करेंगे. You have the value of k. k is equal to -3. एक तो आपके पास ये चीज आ गई, k आ गया. k आ गया तो अब रेशियो निकाल सकते हैं आप. ठीक है, आपके पास आ जाएगा. रेशियो निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं. R is any one of the two. कोई किसी भी दोनों में से किसी में भी डाल दें आप. R की वैल्यू क्या आ जाएगी? -12 over 8 into -3, and that is 12 over 24, which is 1 over 2. 1 over 2 या 0.5, that's the ratio. रेशियो आ गई. अब आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है. फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है. हाउ डू यू फाइंड द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करें? We've got the fifth term, sixth term, seventh term. किसी को भी यूज कर लें. टर्म फॉर्मूला अप्लाई कर दें जीपी का. टर्म फॉर्मूला क्या होता है जीपी का? Let me write that here. AR raised to power n minus 1. Again, ये फॉर्मूला शीट में ये भी दिया होता है. इनमें से कोई भी यूज कर ले. लेट्स से 6 यूज कर लेते हैं, उसमें k नहीं है. 6 टर्म यूज कर लेते हैं. लेट्स से T6 is going to be A हमें नहीं पता, into R. R is now 1 over 2. Raised to power 6 minus 1. T6 किसके इक्वल है? हमें पता है -12 पे इक्वल है. -12 इनपुट कर दें. -12 equals A over 1 over 2 raised to power 5. 2 raised to power 5 जाके वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, and we'll get the first term from that. ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? -12 into 32, which is -384. ये आपके पास आ गई फर्स्ट टर्म. You've got the first term, you've got the ratio. जाके इनपुट कर दें सम टू इन्फिनिटी के फॉर्मूला के अंदर. इसमें जाके इनपुट कर दें ये दोनों चीजें. रेशियो इनपुट करनी है और ये सम टू इन्फिनिटी फॉर्मूला इनपुट करना है. ए इनपुट करना है. A is -384 divided by 1 minus the ratio. Ratio is 1 over 2, and that gives you something. 384 times 2, which is -768. That's the sum to infinity that you've got for this. ये आपको figure out करना. ठीक है? This was question number 5 from this paper. Let's move on. Next, we've got question number 6. The equation of a curve is y equals 2k minus 3 whole x square minus kx minus k minus 2, where k is a constant. The line y equals 3x minus 4 is a tangent to the curve. Find the value of k. Okay.
let's do this. This is the second last question. Okay. Achha, let's try this. I think it's probably not a good idea to start with the more difficult questions because then your energy gets drained in the very beginning. और फिर आसान वाले questions नहीं होते. Maybe we can just go in order from next time. आसान वाले questions थोड़ा जल्दी कर लिया करें और फिर हम बाकी कर लें. So we can just go in order like we usually do. So we have some easy question and then some difficult questions. This is interest bhi rehte because now it's like it's relatively easy questions left. So that's I'm also getting bored now. Yeah, so yeah, we can do that. Yeah. M1 S1 tomorrow. Yeah, I could do that. I'm not going to be able to do 2 papers. I think I'll see. I'll see. अगर दोनों हो जाए S1 में जल्दी हो जाता है M1 में थोड़ा टाइम लग जाता है फिर भी. Yeah, sure. Yeah, we can do that. So instead of paper 3 tomorrow, we can do M1 or S1. Yeah, we can do that. Most likely M1 कर लेंगे. Anyway, let's do this first. Achha, the equation of a curve is y equals 2k minus 3 whole x square minus kx minus k minus 2, where k is a constant. The line y equals 3x minus 4 is a tangent to the curve. Find the value of k. Okay. दो functions हैं. एक curve है, एक line है. Curve is a tangent to the curve. Okay, curve is a tangent to the curve. We have to find the value of k. Now, what can we do for this? Quadratics में क्या होता था? When the curve is when a line is a tangent to the curve, when the line is a tangent to the curve, you know that discriminant is equal to 0. तो हम क्या करते हैं? इनको simultaneously जो solve करने वाला method है वो पहले apply करते हैं और फिर जाकर discriminant उसमें क्या कर देंगे? 0 के equal कर देंगे. Let's do that. You've got the two equations. दोनों को equate कर दें पहले तो. Right? That's how you solve two equations simultaneously. Left side में आपके पास क्या आ जाएगा? 2k minus 3 whole x square minus kx minus k minus 2. On the right side, you've got 3x minus 4. सबसे पहले तो equate कर दीजिए. ठीक है. अब इसको left side को expand करना पड़ेगा. You get 2kx square minus 3x square minus kx. अब राइट साइड वाली टर्म्स लेफ्ट पे आ गई तो लाइक टर्म्स को इकट्ठा रखते हैं kx minus 3x then we have minus k plus 2 and plus 4 equals 0. ठीक है. राइट साइड वाली टर्म्स मैंने लेफ्ट पे लिख दिया आगे after simplification. And now what we can do is you can actually just do one more step. 2kx square minus 3x square minus kx minus 3x minus k plus 6. Bring the like so take x square and x common from the like terms. First two terms से x square common ले लें. यहाँ पे क्या बन गया? 2k minus 3 whole x square. इनमें से x common ले लें. What are we left with? या तो आप minus बाहर रख सकते हैं if you want, या फिर उस बाहर plus रख लें, अंदर minus कर लें. दोनों एक ही बात है. That's your choice. Let's say minus बाहर रखा, अंदर I've got k plus 3 into x. And then this is the constant minus k plus 6. ये पूरा का पूरा आपके पास constant है. अब क्या करना है? आपको discriminant equal to 0 करना है. What you can do is you can write down the values of a, b, and c here first. A should be 2k minus 3. B is minus into k plus 3. And c is minus k plus 6. What you do is you say b square minus 4ac is equal to 0. And that gives you minus into k plus 3 whole squared minus 4 into 2k minus 3 into minus k plus 6. That should equal 0. इस equation को solve कर लेंगे. अब ये minus का square तो वैसे ही positive हो जाता है. So we can just square k plus 3. K plus 3 का square क्या हो जाएगा? K square plus 6k plus 9 minus 4 into 2k into minus k, that's minus 2k square. 2k into 6 is 12k. Minus 3 into minus k is plus 3k. Minus 3 into 6 is minus 18. That equals 0. And now we just multiply 4 inside as well. That gives us k square plus 6k plus 9
plus 8k square minus 48k minus 12k plus 72 equals 0. Very few people end up getting these questions correct, totally correct at the end. The reason for that is कोई ना कोई sign error हो जाता है. So be careful about the sign errors. आपने उसका ख्याल रखना. ठीक है. अच्छा उसने यहाँ पे I'm just reading the statement again. उसने कहा find the value of k. इसका मतलब है k की एक ही value आनी चाहिए end पे. So let's see how we're going to get that. One single value. 9k square. And then 6k minus 48k minus 12k. What does that give us? Minus 54. Minus 54k. Constants are 9 and 72, which becomes 81. And now we can divide by 9. It becomes k square plus 6k minus 6k plus 9 equals 0. Now we factorize this. K square minus 3k minus 3k plus 9 equals 0. It turns out to be k minus 3 into k minus 3. So repeated roots are here. So a की value आपके पास आ जाती है. K is equal to 3. And that's what we were looking for. This is the value of k here. Okay. So that was question number 6. Now let's do the last one that we're left with. It's an identity that we've got to prove. 1 minus 2 sine square theta over 1 minus sine square theta, that equals 1 minus tan square theta. अच्छा, हम किस साइड से स्टार्ट करें? लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन है, राइट साइड फ्रैक्शन नहीं है. It's going to be easier to start from the left side. Tan में convert करना है, so we need sine over cos somewhere, right? इसको हम tan में convert कर सकें, something like that. So what we can start from is, if you start from the left hand side, हम denominator को cos में convert कर सकते हैं directly because we know 1 minus sine square theta क्या होता है? That's cos square theta. Okay, so we got this. And now we think about what we can do with this. इसको हम किस तरह से 1 minus tan square theta में convert करें? We can break down the fraction. It becomes 1 over cos square theta minus 2 sine square theta over cos square theta. अब यहाँ पे तो हमारे पास tan square theta आ गया already, so that becomes minus 2 tan square theta because sine over cos is tan, so sine square over cos square becomes tan square. So you got tan square there already. And then we have to think about what to do with 1 over cos square. 1 over cos square के साथ क्या करें? Okay, what we can do here is we could say 1 over cos square is secant square. Why am I doing that? Because if you remember your identities, अच्छा खैर वैसे पेपर 1 में वो तो नहीं होती, उसके बगैर भी आप कर सकते हो. Let me just show that to you. हम एक तरीका ये हो सकता था कि हम यहाँ पे फॉर्मूला शीट में जाएं. Remember this identity? आपने पेपर 3 में की हुई है. 1 plus tan square theta equals secant square theta. So if you know that, you can use that. Let me do it this way first, and then I'll show, for those of you who haven't done paper 3 yet, I'll show you another way. After that, secant square theta क्या होता है? I just showed you the identity. 1 plus tan square theta is basically equal to secant square theta. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. This is 1 plus tan square theta minus 2 tan square theta, and that is 1 minus tan square theta. And that's equal to the right hand side. This is one way to do it, but I understand some of you probably haven't done. Some of you haven't done this identity. ये paper 3 में होती है. So let's do it the other way. जो लोग AS अलग से देते हैं, इसका भी और तरीका देखते हैं. So let's do it another way. इसको right left पे कर लेते हैं. Okay. Now let's do something else. Left hand side हमारे पास ये थी 1 minus 2 sine square theta over 1 minus sine square theta. This is what we had there. Now, what do we do with this?
डिनोमिनेटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसी तरह से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, सो वी नो द डिनोमिनेटर ना। न्यूमरेटर में क्या किया जा सकता है, इसको अगर हम उसी तरह से देखें 1 माइनस, या so we could actually break it down like this. We could say it's the same thing as saying 1 minus sine square theta माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लें, राइट, दैट डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। जो 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था उसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर सेपरेटली, एंड देन दैट्स द सेम थिंग एज सेइंग 1 minus sine square theta, this becomes cos square theta minus sine square theta over cos square theta, right? And now we break down the fraction cos square theta over cos square theta minus sine square theta over cos square theta. Cos square over cos square becomes 1, sine square over cos square becomes tan. We get 1 minus tan square theta, which is equal to the right hand side. This could be another way to do that. Okay? So that's the first part. Let's look at the next part. Now it says, hence solve this equation. अच्छा, now let's see कि in इस equation में ऊपर equation में क्या चीज common है. 1 minus 2 sine square theta, 1 minus sine square theta. So left part जो है वो है जो ऊपर लिखा हुआ है. इसका हमने क्या prove किया? This is equivalent to 1 minus tan square theta. Okay. So this thing is the same thing as 1 minus tan square theta. This is what we have proved in the first part. और उसको क्या लिख देंगे? हम कहेंगे this is the equation 1 minus tan square theta equals 2 tan raised to power 4 theta. This is the equation that we want to solve. Now, let's see what we can do with this. एक साइड पे ले जाए सब कुछ. It becomes tan raised to power 4 theta plus tan square theta minus 1 equals 0. Now, how do we solve this equation? It's not quadratic, it's power 4. Power 4 आ गई है, लेकिन आप देखें आपकी जो powers हैं they are in the ratio 2:1. Powers की ratio वही है 2:1. तो इसको आप क्या कर सकते हो? इसको as a quadratic treat कर सकते हो. किस तरह treat करोगे? आप छोटी power को किसी और variable से replace कर दोगे. So you can say let another variable, any other variable, you can say let m. I use m because m बहुत rarely question में use होता है तो repeat नहीं होता. You can use any other letter doesn't really matter. m equals 10 tan square theta. तो जो छोटी पावर है उसको हमने किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया. अगर आपकी पावर्स की रेशियो 2:1 है, ये 4 है, ये 2 है, 2:1 की आपकी पावर की रेशियो आ रही है. What does it become? 10 raised to power 4 क्या हो जाएगा पे? अगर m ये है, that's going to be m raised to power 2. 2m square plus m minus 1 equals 0. We solve this quadratic equation. It's going to be 2m square plus 2m minus m minus 1 equals 0. From the first two terms, we have m plus 1 as common. From here, we get m plus 1 again. And then that gives us 2m minus 1 into m plus 1 equals 0. M equals 1/2 or m equals minus 1. These are the two values of m that we're getting here. ठीक है, लेकिन m क्या था? m तो tan square theta था. Let's input that back now. Tan square theta is 1/2 or tan square theta is minus 1. अब square तो negative नहीं हो सकता. Square तो negative नहीं हो सकता. So tan square theta equals minus 1. This is not going to give us anything. This is not possible. Right? Square root of -1, ये तो error आ जाएगा. Tan square of theta equals 1/2. इसका मतलब क्या हुआ? Tan theta क्या हो जाएगा? It's going to be plus minus. Do not forget plus minus. जब भी square root लेते हैं plus minus लगाते हैं. So we got plus minus square root of 1/2. ये आपके पास आ गया. Now tan can be either positive or negative. तो मतलब positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. तो चारों quadrants में से कहीं भी हो सकते हैं हम. Right, because plus minus दोनों possibilities है. However, we are given that the interval is from 0 to 180. तो या तो हम first quadrant consider करेंगे या second quadrant consider करेंगे. Now we find the basic angle. Basic angle के लिए हम क्या करते हैं? We say tan alpha
equals square root of 1 over 2. Basic angle के लिए हम positive consider कर लेते हैं इसको. We find the basic angle now. Remember, we're dealing in degrees here. Degrees में basic angle निकाल लें. Tan inverse of 1 over square root of 2. See what that turns out to be. I think it's 45 degrees, as far as I remember. Just check. अच्छा नहीं, मेरा radians के अंदर है calculator. Degrees. No, it's not 45. It's actually something else. It's 45 to 1. अच्छा 1 over square root of 2 कुछ और होता है. वो yes, the sine cos में होता है. अच्छा, this is 35.26. That's what I'm getting. इसने कोई restriction दिया है? No. अच्छा, alpha equals 35.26. That's the basic angle that I'm getting. We can either be here in the first quadrant or we can here in this we can be here in the second quadrant. So आपकी values क्या होगी theta की? Theta could be in the first quadrant, that is 35.26, or in the second quadrant वाला angle क्या हो जाएगा? 180 minus 35.26, and that gives me 180 minus answer, that is 144.76 degrees. You can round these off now. You can say this is 144.74 आ रहे हैं, not 674, 144.7 degrees, or you've got 35.3 degrees. यहाँ पे वैसे क्वेश्चन के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है accuracy की, तो आप ये भी छोड़ सकते हो. This is also fine. These are the values of theta that we get from this. ठीक है, remember ये plus minus था यहाँ पे, इसलिए दोनों quadrants consider कर रहे हैं, सिर्फ एक नहीं. That's question number 7. And we're done with the rest of them. That completes our paper. That was June 2021, paper 1, variant 1. So we're done with this. I hope this was helpful. That's it for today. We'll stop here.